Okay, should we start the class for today? And I hope you people are sitting around and we have started a topic called set off, counterclaim, and equitable set off. These three things are there, and that's these all three things are very relevant there. Let me open the a rough page on that note so that something more flowchart and diagram I could make on that. See. See the point we got there. Uh, Anyhow, moving further on to this topic here, थोड़ा सा मैं चेक कर लूँ इसको. Anyhow, just managing the situation and coming on that particular issue we got there. So three things are there which we supposed to read in this topic there. That's set off. Second thing is counterclaim, and the third one is that equitable set off. Equitable set off. And these two things we already got to understand that, for having the set off. And what is the set off? The set off is the reciprocal acquittal of debt between the plaintiff and the defendant. Whenever the plaintiff setting his claim for any certain sum of money, in that very case, and defendant thinks that he has also certain claim on that, and sum of money is a certain sum of money, and it comes within the pecuniary jurisdictions of the court, and both of the parties are filing the cases are of the similar character. In that very case, the defendant has got the right to claim the of course set off in this particular situation that so we got to see that set off जो कि हमेशा a certain sum of money के लिए अलाउ होती है. लेकिन जब वही सेट ऑफ अनसर्टेन सम ऑफ मनी के लिए कोर्ट अलाउ करती है अपने डिस्क्रिप्शन से, अपनी अथॉरिटी से, तो हम उस चीज़ को कह देते हैं वो इक्विटेबल सेट ऑफ है. तो लास्ट क्लास में हमने सेट ऑफ पूरा पढ़ा, सेट ऑफ के एग्जाम्पल्स पढ़े, है ना. हमने इक्विटेबल सेट ऑफ्स क्या होती हैं वो पढ़ा, और इनका जो डिफरेंस क्या होता है हमने वो भी पढ़ा. अब आते हैं समझते हैं काउंटर क्लेम्स क्या होते हैं. अब हम इसको समझते हैं काउंटर क्लेम्स क्या होते हैं. ठीक है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर मैं सेट ऑफ के लिए आपको याद दिलाता हूँ, कुछ बातें थी जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी सेट ऑफ के लिए, कुछ कंडीशंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं. ओके, देयर आर सम इंपॉर्टेंट. अच्छा पहले मुझे स्पेसिफाई कर दीजिए ऑडियो वीडियो आपको आ रही है प्रॉपरली, आर यू गेटिंग इट प्रॉपरली देयर ऑडियो एंड वीडियो. प्लीज कंफर्म मी दैट and please let me know whether the audio is proper. Please let me know. क्या प्रॉपर ऑडियो आ रही है आपको? दैट्स इट एंड फाइन. आज फेस टू फेस क्लास में नहीं रखी आज की फेस टू फेस क्लास, बट लाइव क्लास ऑनलाइन जरूर रखी हुई है. सो प्लीज लेट मी नो दैट आर यू गेटिंग दिस ऑडियो प्रॉपरली देयर. I'm not getting any reply.
से चेक कर लेते हैं फिर. Is it coming properly? Whether audio and video. Can you please confirm me? Are you getting my voice properly there? Should I proceed on that? Should I proceed on that? Okay, it seems the audio is coming properly there, and I hope you must reply on that. All it's okay. Good morning. Good morning, Anubhav. Okay. Okay, someone has given the reply that audio is proper. So in the last class, we got to see, of course, the set of and equitable set of. These two things we got to see that, And today what we supposed to find out, the topic name called the counterclaim. From the same chapter, one more topic we need to find out the counterclaim. Before going on to this topic in deep, I need to, of course, remind you what's the grounds on the basis of which the set off is granted by the court. The first ground is very common and very simple. The suit must be related with the money. That should be related with the money, what you may say, that the recovery of the money. There should be a certain sum of money, and there must be the legally recoverable debt, and it must be recoverable by defendant or all of the defendants, and plaintiff or all of the plaintiff. And there should be the matter called the pecuniary jurisdictions as well. And the next thing is that both parties must file the same character suit. Same character suit must be filed as well there. Means that the three things that is very, very important. The suit must be related with the money. Second, a certain sum of money, and suit must be of same character. Pecuniary jurisdictions of the court, कोर्ट की pecuniary jurisdictions होनी चाहिए. And one more thing, legally recoverable डेट. मैं इसकी नंबरिंग कर देता हूँ. 1 2 3 4 5. एक और था जो प्लेंटिफ, ऑल ऑफ द प्लेंटिफ, डिफेंडेंट, ऑल ऑफ द डिफेंडेंट्स, दिस वन. अच्छा, सपोज करो कि हम जो सेट ऑफ क्लेम करने जा रहे हैं, डिफेंडेंट जो सेट ऑफ क्लेम करने जा रहे हैं, वो मनी से रिलेटेड नहीं है. इट इज समथिंग डिफरेंट व्हाटसोएवर. Even it's not the certain sum of money. Even the suits are not of the same character. Okay. These three things are not satisfied. Even though the defendant wants to claim the set off, the set off won't be allowed at all. Then what the defendant will do that? In that situation, the defendant may put his counterclaim. He is stating to the court that, although the plaintiff has made such and such claim against me, but even I have got certain points to raise against the plaintiff. Even I have got certain points. Although my points, my amount doesn't mean to, of course, the certain sum of money. Probably it is not related with the money. Possibly it is not the suit for the same character. Even though I have my claim against the demand of the plaintiff. So may I request the court to kindly consider my claim as well. If the court is considering admitting this claim,
then we can say that this claim is the counterclaim. This claim is the counterclaim. मैं फिर से बताता हूँ आपको, सुनिए, फिर से सुनिए. ए है, बी के ऊपर कुछ पैसे की रिकवरी सूट फाइल कर रहे हैं, है ना. एक रिकवरी सूट फाइल किया, रिकवरी सूट फाइल किया. बी भी क्रॉस क्लेम कर रहे हैं, क्लेम कर रहा है अपने इस सूट में, लेकिन ये नॉट फॉर ए सर्टेन सम ऑफ मनी, ए सर्टेन sum of money. What he is claiming that it is not the certain sum of money. The second thing is also very relevant. What we supposed to have that, these both claims are, claim of plaintiff and claim of defendant are not of the same character, not of a same character. ये सेम कैरेक्टर भी नहीं है. और तीसरी बात जो है, दैट वाज प्रोबेबली जो सेट ऑफ क्लेम कर रहा है, इट्स नॉट फॉर द मनी, नॉट फॉर द मनी. मतलब सेट ऑफ के जो ये तीन इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, वो तीन कंडीशंस में से किसी भी कोई कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, कोई एक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, दो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, और फिर भी अपना क्लेम कोर्ट के सामने रख रहा है और यकीन कर रहा है, कोर्ट को भरोसा दिला रहा है कि आप हमारे क्लेम के ऊपर यकीन कीजिए. तो हम डिफेंडेंट की इस क्लेम को सिंपली कह देते हैं कि दिस क्लेम इज कॉल्ड व्हाट, काउंटर क्लेम. दिस क्लेम इज कॉल्ड व्हाट, काउंटर क्लेम. सो दिस इज द पॉइंट कॉल्ड हियर काउंटर क्लेम. This one, the point called here. See, the point first is the money. The second is the certain sum of money. Third thing, the suit must be of same character. Of course, fourth thing is there should be the pecuniary, within the pecuniary jurisdictions of the court, and it should be for the legally recoverable debts. It should be for the legally recoverable debts there. So, if these things are there, then we can say that, of course, that is the claim is called here. अगर मान लो ये पांचों चीजें हैं तो वो सेट ऑफ हो जाती है कि नहीं. पांचों चीजें हैं तो सेट ऑफ हो जाती है. अगर पांच में से मान लो सिर्फ सेकंड चीज मिसिंग है तो वो इक्विटेबल सेट ऑफ हो जाती है कि नहीं. अगर मान लो सिर्फ सेकंड थिंग मिसिंग है, मैं सिंपल ऐसे बताता हूँ आपको. अगर देखो ऐसा होता है, अगर आप इसी में ले लो, हम कहते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये पांचों चीजें सेटिस्फाइड है. ऑल दिस 5 थिंग्स आर देयर, जो यहाँ पे 5 लिखे हैं सब कुछ है, तो हम इसको कहते हैं, फिर ये सेट ऑफ क्लेम किया जा रहा है. ये सेट ऑफ है जो लीगल सेट ऑफ कहते हैं. लेकिन 1 है, 2 जो है ये नहीं है, मतलब ए सर्टेन सम ऑफ मनी नहीं है. लेकिन 3 है, 4 है, 5 है, तो हम इसको कहते हैं इक्विटेबल सेट ऑफ. इक्विटेबल सेट ऑफ सही है. लेकिन देखो 1 2 3 4 5, अगर इनमें से कोई भी नहीं है, मतलब 1 मिनट, ये नहीं है और ये नहीं है, और फिर भी हम क्लेम कर रहे हैं कोर्ट को, तो हम इसको कहते हैं काउंटर क्लेम. क्लेम इसमें कहते हैं ऑल और एनी वन, ऑल और एनी वन इज मिसिंग.
I hope it clear to you. This one. Just a minute. Hmm. So this thing is the point we got there. First, second, third. तो इस तरह से हम इन चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं. तो हम इसको क्या कह रहे थे? दैट इज कॉल्ड हियर काउंटर क्लेम. आई होप काउंटर क्लेम के कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे और थोड़ा सा बुक से आपको स्टडी करा देता हूँ मैं. देखिए यहाँ से इक्विटेबल सेटअप आपको बता दिया, लीगल इक्विटेबल सेटअप के डिफरेंस करा दिया, काउंटर क्लेम मीनिंग यही है, आपको मैंने समझा दिया पूरा. इफेक्ट क्या होता है? कोर्ट के लिए मैंडेटरी नहीं है कि काउंटर क्लेम को एक्सेप्ट करे. If the court thinks proper, it is acceptable, then court will accept. Otherwise, the court may reject that counterclaim. That Otherwise, if you are claiming the set off, then it's mandatory for the court to accept the set off. But counterclaim, it's not very much mandatory. काउंटरक्लेम को भी प्लेंट मानेंगे एंड प्लेंटिफ के पास राइट होता है कि वो उसके लिए फिर रिटन स्टेटमेंट फाइल करे इन आंसर टू द काउंटरक्लेम. Effect of counterclaim is that even if the suit of the plaintiff is stayed, discontinued, dismissed, withdraw, the counterclaim will be decided on merits. This one, the point called here. So that was difference between the set off and counterclaim distinctions. Okay. Distinction between the set off and counterclaim is very important and therefore must be carefully considered. Set off is a statutory defense to a plaintiff's action, whereas a counterclaim एक substantially cross action है. Substantially a cross action है. Okay. Set off must be for a certain sum or it must arise out of the same transactions, and counterclaim need not arise out of the same transactions. Set off is a ground of defense of the plaintiff's action. In other words, format is a ground of defense that
in case of legal setup amount must be recoverable. ये सब हम कर लिए हैं एंड ये सब हमने डिफरेंस है, आप इनको चेक कर लीजिए. वी हैव ऑलरेडी डन दैट, आई नो. अब ये सारे क्वेश्चंस हैं, आप क्वेश्चंस को कीजिए एंड ज़रूर इन सारे क्वेश्चंस को आंसर कीजिए, बिकॉज ये सारे क्वेश्चंस मैंने कराए हुए हैं आपको जब करा रहा तो. What do you understand by the setup and counterclaim? What are the differences between them? We have already done that, you know. No? So this one. ये सारे एग्जाम्पल किए हैं हमने. So it's better you do all these things. और आज शायद आपका प्रेजेंस भी नहीं है, तो आज हम यहीं रखते हैं. ये चैप्टर हमारा फिनिश है और अगली क्लास में हम एक और नया चैप्टर शुरू करेंगे सीपीसी में. आज यहीं रखते हैं.